Hello, my dear students. How are you all? I am your Ayush sir, and आज हम शुरू करते हैं chapter review of chapter number 5, that is algebraic expressions. Now, first question: the coefficient of 13x square y is. तो बच्चों में सिंपली चेक करना है what is the numerical coefficient of 13x square y, that is 13. So A part. Second question: the constant term in the expression minus 6xy minus 9. So constant term is minus 9. So answer is C part. Third question: the degree of the expression 7x is to 4. तो बच्चों डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन दी एक्सप्रेशन. यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है. आफ्टरवर्ड्स 2 + 3 5, 3 and 1 4. तो 4, 5 and 4. So we can say highest power is 5. So degree is 5. Fourth question: the pair that represents like term is. तो like term का मतलब वेरिएबल एंड उनकी पावर सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे वाई एक्स, तो ये like term है. बाकी सब में वी कैन सी कि वेरिएबल अलग अलग है या फिर पावर वेरिएबल की अलग अलग है, तो बाकी सब like terms नहीं है. Now question number 5: if a is equal to 2x square minus 3xy plus 5 and b is equal to 4xy minus x square, then the value of 2a plus b. तो बच्चों इसका मतलब वो हम पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. सो 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5 प्लस 4xy minus x square. So 2 into 2x square becomes 4x square minus 6xy plus 10 plus 4xy minus x square. So 4x square minus x square becomes 3x square minus 6xy plus 4xy becomes minus 2xy, and in the last plus 10. So answer is 3x square minus 2xy plus 10. That is our C option. Now question number 6. Question number 6 is find the number of diagonals in a nonagon. तो बच्चों नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n into n minus 3 divided by 2. So in case of a nonagon, number of sides is 9. So we can see that the value of n is 9 over here. So 9 into 9 minus 3 divided by 2, that is 9 multiplied by 6 upon 2. We can do cancellation, and 9 3s are 27. So answer is D part, 27. Seventh question: the algebraic expression of the statement 1/4 of y subtracted from thrice the number x. So 1/4 of y means y upon 4 subtracted from thrice the number x. So subtracted from thrice the number x. So 3x minus y upon 4, or we can say 3x minus 1 upon 4y. So answer is seventh part. Now eighth one: 6m plus 11n minus 4m minus 5n and so on. We have to simplify it. So बच्चों first step is to open the brackets. So 6m plus 11n minus 4m, now minus minus becomes plus, plus 5n minus 3m plus 7n. Now 6m minus 4m becomes 2m minus 3m becomes minus m. Afterwards 11n plus 5n becomes 16n plus 7n becomes 23n. So answer is B part, minus m plus 23n. Now question number 9: if the value of the expression y square plus 18y plus k is the smallest even perfect square, then we have to find out the value of k when y is given to us as minus 3. So question number 9: y square plus 18y plus k, that should be equal to smallest even perfect square number, which is 0. 0 is the smallest even perfect square number. हमें इसमें रिप्लेस करनी है वैल्यू ऑफ y इज minus 3. So minus 3 square plus 18 into minus 3 plus k is equal to 0. So 9 minus 54 plus k is equal to 0. So minus 45 plus k is equal to 0. Now we will take minus 45 on the right hand side. It will become positive. So value of k comes out to be
45. So answer is C part. Now 10th one, P is 2x square plus 8x square y minus 6y square, and we have given Q. We have to find out first of all the value of P minus Q. So enclose them in the brackets. So 2x square plus 8x square y minus 6y square minus Q, and Q is 7x square y minus 8x square minus 6y x square. Open them. 2x square plus 8x square y minus 6y square minus 7x square y. Now we are opening the bracket and bracket के बाहर है नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा. सो प्लस 8x स्क्वायर एंड प्लस 6. अब बच्चों हमेशा लिखा करो इनके वेरिएबल्स को अल्फाबेटिकल फॉर्म में, जिससे कि एडिशन वगैरह करने में प्रॉब्लम ना हो. सो दैट वाज वाई एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट डाउन एज एक्स स्क्वायर वाई. अल्फाबेटिकली एक्स स्क्वायर पहले आ गया, वाई बाद में आ गया. नाउ विल चेक द लाइक टर्म. 2x square and 8x square becomes 10x square. 8x square y minus 7x square y becomes 1x square y plus 6x square y becomes 7x square y. Afterwards minus 6y square. ये हमने किया सिंप्लीफाई. अब हमें रिप्लेस करनी है इसमें वैल्यू ऑफ x एज -1 एंड y एज -2. तुमने रिप्लेस किया वैल्यू ऑफ x एज -1, तो -1 का स्क्वायर, x -1 का स्क्वायर एंड y इज -2. -6 इंटू y इज -2 का स्क्वायर. -1 का स्क्वायर बिकम्स +1, तो ये 10 आ जाएगा. -1 का स्क्वायर बिकम्स +1 एंड 7 2 ज़ा 14, तो ये आ जाएगा -14. -2 का स्क्वायर बिकम्स 4 एंड 4 6 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा -24. सो 10 -14 -24. So answer will be 10 minus 38, and that comes out to be -28. So answer is A part, that is -28. Now subjective questions. First one, classify the following as monomial, binomial or trinomial. That means हमें simply number of terms को check करना है. So 1 2 3, there are 3 terms, so it is trinomial. 26 xyz, this one is monomial. X cube x square, this one is binomial. Xy x and y, it is a trinomial. 61 monomial. X square y square minus xyz, it is a trinomial. Simple question. Now moving on to question number 2. Question number 2 is identify the pair of like terms from the following. Now we have to find out all the like terms in this. So for finding the like terms, we have to check the variables and their power. So here we are having p square q and pq square. Power is different, so these are not like terms. X cube y cube x cube. Variable are same, power is same, but the difference is they are in different order. यहाँ पे x पहले है, y बाद में, यहाँ पे y पहले है, x बाद में. तो both are same only. Okay, so this one is actually like term. अगर वेरिएबल का ऑर्डर आगे पीछे होता है तो इट डजंट मैटर. नाउ सी पार्ट एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी पावर अलग है वेरिएबल्स की, तो ये भी लाइक टर्म नहीं है. सो आंसर इज बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन 12x स्क्वायर वाई. तो बच्चों यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स वाई को रिमूव करना है, बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट. सो जैसे 12x स्क्वायर वाई में से अगर हम x एंड y को रिमूव करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 12x. तो a वाले का कोएफिशिएंट है 12x. b वाले केस में a स्क्वायर में से हम a रिमूव कर देंगे तो कितना बचेगा? a. तो आंसर इज a. इन c पार्ट x स्क्वायर. अब बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ कोई नहीं है, एंड जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है. तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली? इट इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर. तो कोएफिशिएंट कितना आएगा इसका? 1. नाउ डी पार्ट वाई स्क्वायर इन दिस वन पार्ट. तो इसमें से हम वाई स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो जितना भी बचेगा हमारा वो सारा इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा. सो इट विल बी -16 एक्स क्यूब एंड जेड क्यूब. ई पार्ट एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, अगर हम एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? एक्स, एंड बाकी जो भी नंबर आया वो आएगा एज इट इज.
तो कोएफिशिएंट कितना आया, -7/3 XY. XYZ -10 सेम आएगा. आफ्टरवर्ड्स एक्स स्क्वायर में से x रिमूव हो गया, x बचा. y रिमूव हो गया, z स्क्वायर में से z रिमूव हो गया, z बचा. तो कोएफिशिएंट इज -10 XZ. Now moving on to question number 4. Question number 4 is write the terms, factors and coefficients for the following expression. So we need to create a table for this. So in this case, now question number 4. In tabular format, what we are writing is, first of all, algebraic expression. Afterwards, we are writing terms, then factors and its coefficient. So first one is, or A part is 25xy plus 7. So there are two terms in this. First term is 25xy and second term is 7. 25xy ke factors we have to find out. So it will be 25x and y. Now in this case, iska coefficient, we are talking only about the numerical coefficient. So in this case, coefficient is 25. Remember, we are talking only about the numerical coefficient. Now second term is 7. अब इसमें एक ही नंबर है तो फैक्टर भी 7 आएगा. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो इसका कोएफिशिएंट भी 7 आ जाएगा. बी पार्ट -28xp प्लस वाई स्क्वायर जेड. सो टर्म्स इसमें है -28xp एंड सेकेंड टर्म इज वाई स्क्वायर जेड. अब इसके फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक -28, then x and then p. Numerical coefficient is -28. In y squared z, factors are y into z. Numerical coefficient यहाँ पे कोई नहीं है and जिसका कोई नहीं उसका 1. So it will come as 1 over here. Now c part is 80x square yp plus 59m. There are two terms. First term is 80x square yp and second is 59m. Factors, पहले नंबर आ गया 80, then x square है तो 2 times, then y and p. Numerical coefficient 80. Second वाले केस में 59 and then m. Numerical coefficient 59. Okay, I suppose this question is clear. So in the same manner, you can find out for D and E part. It's simple only. Now moving on to question number 5. Question number 5 is, Ananya has M books. Robin has 5 more books than Ananya has. Janaki has 4 times as many books as Robin has. Write down an expression for the number of books that Janaki has, considering the variable as M. So Ananya has M book. It is given to us. So we can write down that number of books with Ananya. So number of books with Ananya are M. Afterwards, number of books with Robin. Now in the question we have given that Robin is having 5 more books than Ananya. So can we say that Robin is having M plus 5 books? Isn't it? Now moving on to Janaki. So number of books with Janaki. So Janaki is having 4 times. Whenever it is times means multiplication. So 4 multiplied by number of books with Robin. So that will be 4 into M plus 5. Or if we simplify it, open the brackets, 4 into M plus 4 5s are 20. So number of books with Janaki are 4M plus 20. Okay. Now moving on to question number 6. Question number 6 is, Amal works in a warehouse packing boxes of CDs for distribution to music stores. An order from store A fills 25 boxes with 9 CDs left over. मतलब उसने जब CDs का ऑर्डर किया, उस CDs से उसने 25 बॉक्सेस पूरे भर दिए. Along with that, 9 CDs extra बच गई. You have to write an expression to represent the order of a store A using X to represent a full box of CDs. Okay.
तो हमें इसकी एक एक्सप्रेशन लिखनी है जिसमें हम सीडीज एंड जितनी सीडी लेफ्ट ओवर है उनका कंबाइन करके एक्सप्रेशन लिखेंगे. सो ए पार्ट इज, we can see there are 25 boxes full of CD and we will use X to show the full box of CD. So we can say 25X and 9 CDs are left over. That means they are extra. That means plus 9. So expression is 25X plus 9. Now B part is, if each full box contains 20 CDs, इसका मतलब हम X के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 20. Because हर बॉक्स में 20 CDs हैं. We have to find out we have to find out how many CDs are the stored ordered. So 25 multiplied by 20 plus 9. 25 multiplied by 2. That will be 500 plus 9. So answer will come as 509. Now moving on to next question. Question number 7. A couple spends rupees X on developing 72 small wedding photos and rupees Y for large wedding photos. How much do they need to spend if they want an extra dozen photos of each size? अच्छा, तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि उन्होंने कंबाइंड रुपीज एक्स स्पेंड किए फॉर 72 स्मॉल वेडिंग फोटोज एंड वाई फॉर 48 लार्ज वेडिंग फोटोज. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हर फोटो की कॉस्ट निकालनी होगी. दैट मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ one small wedding photo, so that will comes out to be, total amount is rupees X divided by number of photos, that is 72. In the same manner, we can find out the cost of one large wedding photo. That comes out to be Y divided by 48, isn't it? Now we need to find out that how much do they need to spend if they want an extra dozen photos. Dozen means 12 photos. So they want extra 12 photos of each size. So we can write down that cost of 12 photos of each size. That means we will multiply one small photo with 12 and multiply big photo, that is Y upon 48, cost of big photo with 12, and then we need to add them because we want the combined cost of both the types of photo. Now we can do some cancellation. 12 ones are 12 six are, and 12 ones are 12 fours are. So we are left with X upon 6 plus Y upon 4. Now we are talking about the cost, so answer should be in terms of rupees. So answer is X upon 6 plus Y upon 4. Now moving on to question number 8. Question number 8 is, it cost rupees X for 4 adult tickets. A child's ticket cost rupees 3 less than an adult ticket. तो बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है कि 4 adult ticket के cost rupees X है. चारों की combined cost हमें गिवन है rupees X. So first of all, let's create some space. Now we have given that the cost of 4 adult tickets is rupees X. So what is the cost of one adult ticket? So cost of one adult ticket should be X upon 4. Pretty simple. Now a child's ticket cost rupees 3 less than an adult ticket. So what is the cost of one child ticket? That will be 3 less than adult ticket. So can we say it is X upon 4 minus 3? It is 3 less than adult ticket. So we got the cost of one adult as well as cost of one child ticket. Now the question is, calculate how much it will cost for a family of 4 adult and 4 children. Okay, so cost, or we can say total cost for 4 adults and 4 childs. So that will be 4 multiplied by cost of each adult ticket, that is X upon 4, plus 4 multiplied by cost of each child ticket, that is X upon 4 minus 3.
Now over here we can do cancellation. It will be x. Now after this one we cannot cancel over here because कभी भी ब्रैकेट के बाहर इस टाइप से कैंसिलेशन नहीं होगा because 4 सिर्फ x के नीचे है 3 के नीचे नहीं है. अगर हमें कैंसिलेशन करना है तो पहले हमें LCM लेना होगा, then we can do the cancellation. So it's better to open the bracket first of all. So it will be 4 into x upon 4 minus 4 3s are 12. There we can do cancellation. So it is x plus x, that is 2x minus 12. And it is the cost. So we should write down in terms of rupees. So answer is 2x minus 12. Acha, one more thing over here. It is given that on family nights, all the tickets go for half price. Okay. So that was the cost for 4 adult and 4 child ticket. Now, as per the question, all the tickets are going in half price. So cost in half price, that will be equal to half of total cost, that is 2x minus 12. So it will be 2x upon 2 minus 12 upon 2. So that means it is x minus 6. So final answer will be rupees x minus 6. पहले हमने फाइंड किया 1 एडल्ट टिकट का प्राइस, फिर हमने फाइंड किया 1 चाइल्ड टिकट का प्राइस. आफ्टरवर्ड्स हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 से बिकॉज दे आर 4 एडल्ट एंड 4 चाइल्ड. उसके बाद हमें कंडीशन गिवन है कि फैमिली नाइट्स पे ऑल द टिकट्स गो फॉर हाफ प्राइस. तो हमने जो भी कॉस्ट आई थी उसको हमने 2 से डिवाइड किया एंड वी गॉट अवर फाइनल आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. The number of non-overlapping triangles is 8, which is obtained by drawing diagonals from one vertex of a polygon. Name that polygon. तो बच्चों पहले ये समझते हैं कि diagonal का मतलब क्या होता है. Diagonal means that in a polygon, let's suppose this one is a polygon. So in this polygon, we are joining two non-adjacent sides. अगर ये है A, B, C and D. A, D and CD are adjacent points. But if we are talking about B, B and D are non-adjacent point. तो जब भी हम दो non-adjacent points को join करेंगे तो बनेगा हमारा diagonal. Let's say in the case of a pentagon, this point is A, B, C, D, E. अगर हम B point से draw करेंगे diagonal तो A and C points are adjacent. तो इनको हम join नहीं करेंगे. So we will join non-adjacent sides. So we can see दो diagonal draw करने के पास हमारे पास 3 triangle आ गए. Isn't it? This thing is clear. So in the same case, if in the equation we are drawing 8 diagonals, sorry 8 triangles we are having. So 8 triangles draw करने के लिए हमें 7 diagonals को draw करना पड़ेगा. Yes or no? And one more thing, we can find one more pattern over here. 3 triangles बनाने के लिए हमें 5 sides की requirement पड़ी. Isn't it? 2 triangles बनाने के लिए हमें 4 sides की requirement पड़ी. 3 triangles बनाने के लिए हमें 5 sides की requirement पड़ी. तो 8 triangles draw करने के लिए we should require 10 points. Isn't it? So from that 10 points or 10 vertices we can draw the polygon, and that polygon should be decagon. So number of sides should be 10. अब देखते हैं इसे विजुलाइज करके कि 10 ही क्यों आया. Let's suppose we are having 2 points, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Let's join these points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हमने 10 points को join किया. हमें draw करने हैं diagonal. So we are picking this one point. So 1 diagonal, 2 diagonal, 3, 4, 5, 6, and in the last 7. Now we can count the number of triangles. It is first triangle, second triangle, third triangle, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth. Isn't it? So in the equation we have given that there are 8 non-overlapping triangles. So we are getting the same. अब इसके लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? So general formula means what expression can we deduce for it? So general formula should be number of diagonals
plus 3. Here number of diagonals are 7. So it is 7 plus 3, that is 10. So answer should be 10 sides, and 10 sides means we are having a decagon. Okay. Now moving on to question number 10. Question number 10 is, you work at a restaurant. The manager asks you to push tables together until you have seats for 50 people to sit together. You have tables that seat 6 people. मतलब एक टेबल पे 6 लोग बैठ सकते हैं. You notice that when you push 2 tables together, you can seat 10 people. मतलब अगर हम 2 टेबल को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद 6 लोगों के प्लेस पे 10 लोग बैठ सकते हैं. एक्चुअल में कितने होने चाहिए थे? 12 पीपल, बट बिकॉज जब हम टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं तो बीच की प्लेस उसमें मर्ज हो जाती है. सो दे कैन सेट ओनली 10 पीपल इन प्लेस ऑफ 12. तो हमें लिखनी है इसके लिए एक्सप्रेशन. तो पहले हम बनाएंगे इसके लिए एक जनरल रूल कि किस टाइप से हम वो एक्सप्रेशन डिड्यूस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कि हमें वन टेबल के लिए वन टेबल पर कितने लोग बैठ सकते हैं. सो वन टेबल 6 पीपल कैन सिट. In the same manner, on 2 tables, 10 people. In the same manner, on 3 tables, 14 people. Isn't it? Yes or no? So we can find our general pattern for this. And the general pattern should be, or general rule should be, we can see differences over here, 4, 4. So it should be a multiple of 4 plus we are getting 2. Why 2? We can check this thing. Just replace the value of n as 1. If n is 1, it will be 4 plus 2, 6. We are getting it. Replace n as 2. 4 to the 8 plus 2, 10. Replace n as 3. 12 plus 2, 14. We are getting same only. So general pattern is 4n plus 2, or general formula is 4n plus 2, where n means n is the number of tables. So we can find out that number of people is equals to 4n plus 2. Now in the equation, we want to seat 50 people, isn't it? So can we say that for 50 people, this 4n plus 2 should be equal to 50 because number of people are 50. Now we can do calculation. So 2 will go on the right hand side. It will become in subtraction. So 50 minus 2, 48. So 4n is 48. So n is 48 divided by 4. It comes out to be 12. So n is 12. Okay. So we require 12 tables to seat 50 people. This question is clear. Now moving on to question number 11. Question number 11 is, a seed you have planted in a pot is starting to grow. When you first notice the seedling, you measure it to be 2.5 centimeter high. Each day after this, you continue to measure its height. It increases by 1.3 centimeter on daily basis. So A part is, write an expression use connecting the height of the plant with the number of days after the plant's height was first measured. Use x to represent the number of days. Okay. So what we can do is, we have to add the expression. So initially height was 2.5 centimeter. Afterwards it was 1.3, 1.3, and so on daily basis. So initially it was 2.5 centimeter. Afterwards it is going on 1.3 centimeter per day, means each day, and the number of days are given to us as x. So can we say that if we measure after 5 days, we have to multiply 1.3 by 5 and add 2.5 in it, isn't it? Because अगर हम उसे 5 दिन बाद नोट करेंगे तो जो डेली हाइट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो इनिशियल हाइट थी उसमें हम ऐड कर देंगे. तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं. इनिशियल हाइट वाज 2.5 and 1.3 multiplied by number of days. So expression is 2.5 plus 1.3x. Now B part is, what would be the height of the plant after 21 days? So in this case, we have given that x is 21. So in this formula, that is
2.5 plus 1.3x, we can replace the value of x as 21. Okay. And after replacing the value of x as 21, we will get the answer after multiplication as 27.3. And if we add these two, we will get the answer as 29.8. So 29.8 centimeter is the height of the plant after 21 days. Now moving on to C part, discuss and give reason why this formula may not be accurate to predict the plant's height after 4 days. अब बच्चों अगर प्लांट अपनी रेगुलर हाइट से इंक्रीज कर रहा है देन वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली, बट एक्चुअल में क्या होता है, प्लांट की हाइट कभी भी सेम पैटर्न पे इंक्रीज नहीं होती है. इट मे बी पॉसिबल कि आज वो ग्रो या 1.3 सेंटीमीटर, नेक्स्ट इट कैन ग्रो बाय 1.4 सेंटीमीटर, इजंट इट? बिकॉज वी आर सिंपली नोटिंग डाउन एंड देन राइटिंग एज 1.3 सेंटीमीटर डेली, बट इन एक्चुअल प्लांट की हाइट कभी भी फिक्स पैटर्न पे ग्रो नहीं हो सकती है. दैट इज वाई दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एक्यूरेट. हाँ, बट अगर वो डेली इन द सेम पैटर्न ग्रो हो रही है, in that case we can say that we can find out the accurate height of the plant after 4 days. Now moving on to question number 4. In question number 4, we have given the value of P, Q and R. We have to find out the value of P minus 2Q, P minus Q plus R and 3P minus R plus Q. So first of all, let's create some space for the calculations. Now, A part is find P minus 2Q. So P minus 2Q. Replace the expressions. P is x square minus y square. And whenever you are doing subtraction, always use bracket. So x square plus 2y square. अब हम brackets को open करेंगे. So x square minus y square minus 2x square. अब ये है अंदर प्लस, बाहर है माइनस, तो कितना बन जाएगा? माइनस 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 प्लस माइनस. So it will be minus 4y square. Now we will arrange in like terms. X square minus 2x square. 1 minus 2 becomes minus 1. So it will be minus x square. Afterwards, minus y square minus 4y square. It will be minus 5y square. So answer is minus x square minus 5y square. B part is P minus Q plus R. So P is x square minus y square, use bracket. In case of subtraction, Q is x square plus 2y square and R is 2x square minus y square. So it is x square minus y square minus x square minus 2y square plus 2x square minus y square. Now just see the like terms carefully. It is x square minus x square. So it is positive and negative. They will cancel it out. Now left one is 2x square. So write down 2x square over here. Now minus y square minus 2y square minus y square. Minus y square means minus 1y square. So minus 1 minus 2 becomes minus 3. And minus 3 minus 1 becomes minus 4. So minus 4y square. That is the answer of B part. C part is, okay, it is the A question first part. This one is A question second part. And now we are doing A question third part. Third part is 3 into P minus R plus Q. So 3 into, now again subtraction. So use one more bracket. It will be x square minus y square minus 2x square minus y square, bracket close, plus Q. Value of Q is x square plus 2y square. So 3, open the brackets, x square minus y square minus 2x square plus y square plus x square plus 2y square. So you can see over here minus y square plus y square cancel out. So it is 3 into x square minus 2x square. So it will become as minus x square plus x square plus 2y square. Open the bracket. Minus 3x square plus x square plus 2y square. Add these two. It will be minus 2x square and plus 2y square.
That is the final answer of third part. Now B part is the result obtained always a binomial? Yes, we can see in all the cases, first one, second one, and third one. All the cases are of binomial. Now C part can we conclude that on adding or subtracting binomials, the result is always a binomial? No. Answer will be no. Reason. As in this case, we have taken P and Q. Let's say we are doing, it is C part. So let's say we are doing P minus Q. Value of P is x square minus y square and Q is x square plus 2y square. If we open it, x square minus y square minus x square minus 2y square. It will cancel out. So answer will be minus y square minus 2y square. That means minus 3y square, which is a monomial, not a binomial. Okay? तो किसी भी दो बाइनोमियल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा बाइनोमियल ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगी. इट मे बी मोनोमियल और इट मे बी अ कांस्टेंट वन और अ जीरो वन. Now moving on to question number 13. Question number 13 is write any two algebraic expressions in three variable whose sum is a binomial and whose difference is a monomial. You have to write down any three expressions, any two algebraic expressions in three variable whose sum is binomial, मतलब दोनों का एडिशन होना चाहिए binomial and दोनों का difference होना चाहिए monomial. So 13th question, let us suppose that we have taken a as, हमने सपोज a को एज्यूम किया x प्लस वाई जेड. यहाँ पे थ्री वेरिएबल है, isn't it? एंड b को हमने एज्यूम किया लेट a बी x प्लस वाई जेड एंड b बी x प्लस 2yz. So we got the value of a, we got the value of b. We have taken two expressions. अब दोनों का हमें चेक करना है एडिशन. तो दोनों का अगर हम सम करेंगे दैट इज a प्लस बी, it will be x plus yz plus x plus 2yz. दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, x plus x becomes 2x and yz plus 2yz becomes 3yz. So we are getting a binomial as per our given condition. Now second we are finding the difference. So difference is a minus b. We can take a minus b or we can take b minus a. Both will be same. So if we are taking a minus b, that is x plus yz minus x plus 2yz. अगर हम करेंगे यहाँ पे b minus a तो आंसर नेगेटिव में आएगा बट आएगा मोनोमियल. ओके, सो x plus yz minus x plus 2yz, open the brackets, x plus yz minus x minus 2yz. We can do some cancellation. So it is yz minus 2yz, that means minus yz, which is a monomial. Okay, so अगर हम दोनों का ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है binomial. If we are subtracting them, we are getting a monomial. There can be infinite number of such expressions जिसमें दोनों का एडिशन आए binomial and दोनों का subtraction आए monomial. Now moving on to question number 14. Write an algebraic expression in which the value of expression is 121 in variable x and y whose values are 2 and 9 respectively. तो बच्चों पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है. हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करनी है जिसका आंसर आना चाहिए 121 एंड जिसमें होने चाहिए दो वेरिएबल x एंड y, जिसमें x की वैल्यू हमें गिवन है 2, y की वैल्यू हमें गिवन है 9. तो बच्चों सिंपल फॉर्म में करने के लिए पहले हम 121 को करेंगे इवन नंबर में कन्वर्ट, जिससे कि 2 से डिवाइड करना इजी हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 121 में से 9 को माइनस कर देंगे. 9 मींस वी आर सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ y. सो 121 minus 9 we are getting as 112. That we can do. Now what we will do is 112 divide by 2. Divide by 2 क्यों किया? Because it is 112 divide by x. We will get the answer as 56, isn't it? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 56 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर शुड बी 112 एंड अगर हम उसमें 9 ऐड कर दें आंसर शुड बी 121. We will get the answer.
अब हम इसमें जस्ट करेंगे थोड़ा रिप्लेसमेंट. इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट हमने 2 के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया? x. 9 के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दिया? y. सो वी विल गेट द आंसर एज 56x प्लस y. अगर हमें इसे क्रॉस चेक करना है, हम इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. इन प्लेस ऑफ x वी कैन रिप्लेस द वैल्यू एज 2. In place of y, we can replace the value as 9. 56 multiplied by 2, 112 plus 9, that comes out to be 121. So our answer is verified. So we are getting the expression as 56x plus y. In this manner, we can find out various expressions. बस जो कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. Now moving on to question number 15. Question number 15 is the value of the expression 10xy plus xz is 162. So 10xy plus xz ये हमें given है 162. And we have to use digits 3, 4 and 5 जो हमें x, y and z की वैल्यू देंगी. It can be different values also. मतलब it may be possible कि x3 हो, y4 हो, z5 हो, या फिर x4 हो, y3 हो, z5 हो. कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. तो बच्चों पे सिंपल सा लॉजिक लगाओ. हम एक्स वाई को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 0 आएगा, बिकॉज 10 का मल्टीपल है वो. इजंट इट? बट जो आंसर आ रहा है फाइनल में, उसमें लास्ट में 2 आ रहा है. इसका मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, मतलब एक्स जेड ऐसा होना चाहिए कि इसको 10 के मल्टीपल्स में ऐड करने के बाद लास्ट में 2 आना चाहिए. एंड दैट वी कैन फाइंड एज 12. बिकॉज अगर हम 12 को ऐड करेंगे 150 में, आंसर कितना आएगा? 162. अब 12 किस नंबर कॉम्बिनेशन है? 12 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 4. इजंट इट? तो या तो x3 होगा, z4 होगा, या फिर x4 होगा, z3 होगा. यहां पे हमें नंबर चाहिए 152, तभी दोनों का एडिशन बनेगा 162. दैट मीन्स इट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड दैट मीन्स 15 मिलेगा हमें 3 इंटू 5 से. सो वी आर गेटिंग 10. अगर हम इसको क्लियरली करके लिखें, वी आर गेटिंग दैट 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, दैट कम्स आउट टू बी 162. अब अगर हम इसे कंपेयर करें विद द गिवन एक्सप्रेशन विच वॉज 10xy प्लस xz, तो बच्चों यहां पे ध्यान से देखो कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है. यहां पे दोनों में x कॉमन है एंड यहां पे 3 कॉमन है. तो कैन वी सी दैट द वैल्यू ऑफ x इज 3? इजंट इट? अब जो लेफ्ट ओवर आया, दैट मीन्स y शुड बी 5 एंड z शुड बी 4. इजंट इट? अगर हमें इसे क्रॉस चेक करना है, कंफर्म करना है, वी कैन डू इट. इट वॉज 10xy प्लस xz. जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x as 3 and y as 5, x as 3 and z as 4. So 10 into 3, 30 into 5, 150, and 4 3s are 12. So answer comes out to be 162, which is correct. So value of x is 3, y is 5, and z is 4. Now moving on to last question, question number 16. Question number 16 is, we have given the polynomial fx. Fx means it is a polynomial in terms of x. So we have given one polynomial which is 7x plus x square minus 5x cube. It is given to us. We have to find out the value of the polynomial when x is 5 and second when the value of x is minus 7. So first of all, what we are doing, we are taking the value of x as 5. So in place of x, we are replacing 5. So expression is 7x plus x square minus 5x cube. So in place of x, replace the value of x as 5 plus 5 square minus 5 into 5 cube. Isn't it? So 7 5s are 35, 5 square 25 minus 5 into 5 cube. 5 cube is 125. So 35 plus 40, 35 plus 25, that will be 60, minus it will comes out to be 625. Okay. So in this case, if we subtract it, 60 minus 625, answer will be minus 565. This thing is clear. Now moving on to second part. Second part is, we have taken the value of x as minus 7.
So in place of x, replace the value of x as minus 7. Afterwards, in the expression, 7 multiplied by minus 7 plus minus 7 square minus 5 into minus 7 whole cube. Now 7 into minus 7, it comes out to be minus 49. माइनस 7 का स्क्वायर, तो बच्चों जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव. सो इट विल बिकम प्लस 49. Minus 5 multiplied by minus 7 cube. 7 cube is 343. So when we multiply this with negative, because cube है and minus के cube में आएगा negative, तो क्या बन जाएगा? minus 343. Now minus 49 plus 49, they will cancel out each other. So we are left with minus minus becomes plus 5 multiplied by 343, and that will be 1715. So our answer is 1715. Answer of A part is minus 565 and B part is minus plus 1715. तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 के चैप्टर रिव्यू कंप्लीट होते हैं. आई सपोज आपको अच्छे समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट वीडियो को फिर से देखना, एंड यू कैन आस्क योर डाउट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.